Today we will start with our first class in essay, and in the previous session, which is also there in YouTube, I told about the general topics which are being asked. So normally, you know, the trend is towards the philosophical questions, and we will primarily focus on that. But again, at the same time, even if there are philosophical questions, still they are linked to certain issues. Fine. And I will start first with the simplest topic. And the simplest topic is with respect to gender justice. And then we will move towards the more abstract topics. Fine. So, as far as the philosophical topics, this itself is a philosophical topic. Topic is there, but the nature of question that is asked is philosophical. So, today we will start the topic of gender justice, and we will see what type of questions are asked and how should we be building the answer about it and what is a trend. So initially this particular topic and then education, because these are also the recurrent questions. So here I have done a question analysis of the topic of gender justice, and we can pick up the topics from the questions which have been asked to understand the trend. So, more or less at a frequent intervals, they have asked the questions on women issues or gender justice issues. And if you see the nature of the work, ये एक और पेपर था ना, एक और है ना. And first of all, what I have, ऊपर बढ़ा दो, what I have noticed कि जो भी statements आ रहे हैं on these issues, they are coming from the prominent scholars. इसके ही ये particular issue है, इतना ही है. अच्छा अच्छा, इससे पहले तो ठीक नहीं. तो नाउ पहले कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? कंटेंट इज ओवरलैपिंग, कंटेंट सेम हमको यूज करना है. क्वेश्चन फर्स्ट जो पहले का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, मैनेजिंग वर्क एंड होम, इज इंडियन वुमेन गेटिंग अ फेयर डील? Fine. So more direct question, but again there was philosophy that was involved. So what was this question? What is the essence of this particular question? Managing work and home, is Indian woman getting a fair deal? What idea, what is the central idea of this particular question? Managing work and home. Work means, yes, economic empowerment of the woman, but it is the new burdens that have been added. Old remains. Is it a fair deal for a woman? Fine. Means, is this going to make the life of women better, or you need to do something more for it? For a fair deal, not only women's work needs to be modified, even the men's work also need to be modified. So the way
economic empowerment has happened. It has, in a way, empowered women, but added the burden and have not reduced the burden. It has not enhanced the very scope for the sense of well-being of women. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक्स आए हैं पहले उनका सेंटर थीम देखते हैं, और सेंटर थीम के बाद वी कैन इजिली फिगर आउट, वी कैन यूज सेम कंटेंट, same set of policies, same approach in writing all the answers. So in your copies you can first write this topic: managing work and home, is Indian women getting a fair deal? I myself is one of the burdened women. So, am I getting a fair deal? And I am in the class managing home, both the things. Every now and then I get a call what to make for dinner. Fine. And I should not say, but my husband may be watching TV. Fine. He will not even take burden to tell the cook कि ये बना लो. You understanding this? That is also a burden. Fine. So ये तो very close to heart topic. I can do that. ठीक है. So now managing work and home, is Indian women getting a fair deal? So what is the idea behind it? Idea is empowerment of women. Women getting a fair deal. पहले हम deconstruct करते हैं. Fair deal. What we mean by fair deal for women? What do you understand by fair deal? ये एक सेंटेंस आपने लिखा, तो टॉपिक्स को समझना कैसे स्टार्ट करना है, deconstruct कैसे स्टार्ट करना है. तो fair deal. What do you mean by fair deal? Fair deal means, is social system fair? The environment in which women are living is fair. Fine. But do you understand what is fairness? And why should there be fairness? Why should we be talking about fairness? Fine. So first of all, in essays, you should be, what is philosophy? Philosophy is an attempt to make certain concepts clear, plus to understand the issues which are involved. तो अगर हमें यही ऐसे एग्जाम में लिखना होता तो हमको इसको कैसे समझना है? We have to open up the topic. Is it related to gender justice? The moment we are talking about fairness, we have to talk about the gender justice. So you have to first find out what is the broad theme here and which data I should have to write this particular answer. So broad theme is gender justice. Now, if I have to discuss what is philosophy, philosophy is going deeper and deeper into something. The level at which a philosopher will discuss will be more deeper than the superficial or empirical level. So now I can understand this is a question of gender justice. So how should I start thinking about gender justice? How should I think? How to open up a topic? नहीं, ऐसे नहीं. मतलब सबसे पहले we need to know that we have to
think about what, and what is the grand idea under which it is just one of the instance, it is one of the strategy for empowerment of women, but that strategy comes with its own set of contradictions, and we require more thinking here. So if I will write answer here, first of all, I have to think about gender justice. Now there are two words, gender and justice. So philosophy demands that you first explain the concept. So between these two terms, while structuring my essay, while planning my essay, I will first think, what is justice? What is the importance of talking about justice? Why is this important? And the rule is first move from general to particular. First think about justice and its significance. Why should we talk about justice? And the second thing, think about gender justice and why it matters. Okay? So now let us, आप अपना ऐसे स्ट्रक्चरिंग करते रहिए कि कैसे करना है. तो हमको पहले क्या समझना होगा, क्वेश्चंस को डीकंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए. तो सबसे पहले we should know why should we talk about justice and what is that, what is justice and why should we talk about justice. ये पॉइंट्स लिखो, इसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ कि हमें क्या सोचना है. ऐसे नीड्स टू बी कम आउट फ्रॉम योर माइंड प्लस विथ सर्टेन डेटा दैट वी कैन प्रोवाइड टू सब्सटैंशिएट. तो हमें वी रिक्वायर थिंकिंग प्रोसेस. वी नीड टू नो how should we think about justice, in what all dimensions do we think about justice. So what you can think about justice, suppose you were supposed to write essay only on justice, then what you would have written? I give you simple topic, write an essay on justice. अगर आपसे जस्टिस के लिए जस्टिस पर ही ऐसे कह दिया जाए, आप क्या लिखने वाले हैं? इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस मीन्स यू विल राइट अबाउट टाइप्स और डोमेन्स ऑफ जस्टिस. But even if you write domains on justice, still you need to tell what is justice. You will say this is economic justice, but my question remains, what is justice? Justice comes from nature, but I don't want to know from where it is coming. I want to know what is justice, what will happen with women. In case of women, what is to be done that will meet your standard of justice? When will you call it just? Giving dual burden to the working woman without changing the pattern of the family, is it just? It is not just. So you have to take a position. Is it just or not? Is Indian woman getting a fair deal? वो तो नहीं है, लेकिन आपको ये कहाँ, आपके पास फॉर्मूला क्या है फेयर डील को मेजर करने का? व्हाट इज द पैरामीटर? सबसे पहले एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है कि हम कब जस्ट मानेंगे. व्हेन विल आई कंसीडर समथिंग जस्ट? देन आई कैन डिसाइड इज इट अ फेयर डील और इज इट नॉट अ फेयर डील. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव अ आइडिया ऑफ जस्टिस. Now my question is, how should I think about justice? Does justice matter to you?
it matters, why it matters. Suppose, तो you need to know how to think about something. ठीक है, पहली चीज जेंडर जस्टिस, तो पहले जस्टिस. अब इसमें तो all the more directly the question is women getting a fair deal? But if I don't know what is fairness and justice, how will I tell that? So what is justice and what is the importance of justice, I should tell. Fine. So when, how will you think? You can personalize things. When do you get this feeling that injustice has happened to you or justice has happened? You may not get the feeling that injustice has happened, but you may definitely get this feeling injustice has happened. You can recognize it more. So when injustice feeling comes, what next? It gives birth to which next feeling? आपके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो आपको कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपको दुख होता है? आपको अच्छा लगता है? आपको खराब लगता है ना? It destroys your sense of well-being. How important is a sense of well-being for you? For any person, is drawing a happiness and being in the state of well-being, is it important or not? What is most important for you in your life? Sense of well-being. Fine. Suppose after becoming an IAS, you don't get well-being, will you leave it or not? Yes. So is this not the very foundational requirement of human mind? So is this not a very foundational urge of us? If we all are humans, this is very, very foundational thing for us. You write the answer of essay not by knowledge but by feeling. You have to talk to yourself, why this issue matter, whether justice matters to me. If injustice happens, how will I feel? So I will not feel good. If I will not feel good, I will not be able to do anything properly. Fine. It means for feel good factor, I expect justice to be done with me. If not justice, at least injustice should not be done. So is it not among the foundational values? What is a value? Value is something which you desire, which you want. Is it something, a preferable state of affair? Fine. So we live in an environment, we want the environment around us give us a sense of well-being, and the sense of well-being is closely attached to the feeling of injustice. And since it is a feeling, it is a characteristic of my mind. That is why we all as a human have an intuition of justice. We have a sense of justice. It is considered as the most foundational value. ठीक है, तो पहले तो उस whatever we are going to discuss, you should first establish some sense of understanding of that particular topic. तो आपको आंसर लिखना है ऐसे में, तो ऐसे में आपको पहले रफ वर्क करना है.
कि what all can I think about this issue, how can I make this issue important. So not just talking about gender justice, you should first talk about justice. And there are many ways you can think, what will I think about justice? So at least this is some preliminary thing you can tell. Justice is important. ठीक है, तो you can take out some points on why should we talk about justice, what is the importance of justice. The reason you can say that justice is considered as very basic instinct among humans. That is why it is said that we all have intuition of justice, oblique sense of justice. ठीक है. So now sense of justice, you need to elaborate more. How do you relate with that sense? How do you get to know that sense of justice? It means तो sense of justice एक वर्ड है. आपको फिलॉसफी में ये सोचना होता है what is the next thing I should be explaining so that a flow comes. Right now we are not writing in the non-answer format, we are just collecting certain ideas and we will see that whether all these ideas we will be able to solve all the questions or not. ठीक है. तो how do you get this instinct? Means if injustice happens, we get a sense of, we don't feel good. ठीक है. तो इसमें लिख सकते हैं if injustice happens, it impacts the state of well-being. Now state of well-being, is it important? ठीक है. तो next we will pick up from here that the state of well-being is essential for what? आपकी जिंदगी के लिए क्या एसेंशियल है? फील करके लिखिए. फॉर पीस, फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ. वरना कहोगे जिंदगी का कोई मायने नहीं रहा, मुझे जीना नहीं, ये दुनिया मेरे काम की नहीं. अगर आप इनजस्टिस हो गया ना, मीनिंगफुल लाइफ. ठीक है. द वेरी सेंस ऑफ fulfilling life, the life will lost the meaning. ठीक है. And that is why justice is seen as a foundational value. Now underline this, justice is a foundational value. What you write, do you understand? Justice is a, I tell you to expand, justice as a foundational value. From, how will you expand justice as a foundational value? You will first tell about value. ठीक है. And then फाउंडेशनल वैल्यू. तो जस्टिस एज अ फाउंडेशनल वैल्यू, अंडरलाइन करो वैल्यू. तो अब हमारा चैलेंज है हाउ वी विल टॉक अबाउट वैल्यू. एंड फिलॉसफी इज एबिलिटी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. ठीक है. तो व्हाट इज वैल्यू? तो वैल्यू इज समथिंग
which holds importance for us. Importance for us, which is desirable for us, अंडरलाइन करो डिजायरेबल फॉर अस. ठीक है, तो फिर जस्टिस इज अ वैल्यू बिकॉज we all want just treatment with us. We all want just treatment with us. Just treatment. Who is going to do this treatment? Others. Means society. ठीक है, देखो right, it is natural that we all aspire to live in a just society. Why do we aspire to live in a just society? Because sense of well-being is so inextricably linked with the sense of justice. Just society, लिखो right, because the sense of well-being is inextricably linked या linked with sense of with the environment of justice. ये सौरभ से कहना, ये नहीं बना with justice. तो हमें ऐसा कुछ कहना है जो मीनिंगफुल हो और हमें एक क्लैरिटी ऑफ विजन दे कि आर वी अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू and its significance. And you should, essay writing is also something which is very, very personal thing. You should be relating it. You should be very emphatic with that concept. ठीक है, तो development of this particular thinking. You can also dramatize that what happens if a person gets a sense of injustice. क्या हो सकता है if there is a sense of injustice? What can be the potential consequences if you deal someone with, बनाया था तुमने पीछे वाला भी, अच्छा ओके यही करें, ओके नहीं करें, ठीक है. तो if we, you need to also show now what is the value of justice. क्यों है इंपॉर्टेंस. आप कुछ ऐसा करते जाइए तो आगे कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे करेंगे जिसमें उसी कॉन्सेप्ट को ही हम इलैबोरेट कर लें, उसी कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रेच कर लें. मान लीजिए, तो आपके हिसाब से हाउ डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ जस्टिस. एक तो मैंने बता दिया, आपका ही सेंस ऑफ वेलबींग नहीं रहेगा. व्हाट एल्स? डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी तो क्या होगा? सोशल रेवोल्यूशंस हो सकते हैं. मेन, हाँ, मतलब you should not just talk about the consequences only at your own level. You should also be able to discuss the consequences at a wider level to show the seriousness of the issue, that if justice is not meant, it is not that only individual is going to be affected. It can have a wider consequences for
the society at large, and for the humanity at large. ठीक है, तो पहला सीखना है कि उस चीज की डेप्थ में जाना है, पहले पर्सनल फिर ब्रॉडर आप एक्सप्लेन करें. ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन से दैट, राइट, if injustice happens, it not only impacts the individual, it not only impacts the individual, but it has the wider, it has the consequences for society at large, and even the future of humanity. Future of humanity. Now tell me, can you give some illustration to substantiate this point? There are n number of examples in history, n number of examples in present. Today, because of the Israel-Palestinian issue, the future of humanity is at stake. And from where all this starts, somewhere there is a feeling of historical injustice, and with both the parties in dispute or not. So you need to tell your understanding of the issues. Any other example? Try to look for the example, not just one example. Try to look for examples so that you can discuss a trend. ठीक है, तो आपको कोई एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अलावा लगा कि कहीं इनजस्टिस हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था? हिटलर को क्या लगा? इनजस्टिस हुआ. मुसोलिनी को लगा इनजस्टिस हुआ. ठीक है, अगेन गो बैक, पीछे जाइए, और इनजस्टिस 1947, go back. We are talking about women and injustice. Can you bring Draupadi? ठीक है, the injustice with Draupadi, ultimately injustice with Duryodhan, injustice with Dhritarashtra, all these things ultimately culminated into what? Mahabharata. What? सीता ने इनजस्टिस को बहुत अपोज नहीं किया एक्चुअली. तो हमें जिनको जस्टिस इनजस्टिस की ज्यादा वैल्यू नहीं थी उनके लिए नहीं, हमको ऐसे जिन्होंने इनजस्टिस को लेकर के सीता से ज्यादा राम ने अपोज मतलब कर दिया ना, कोई भी. मतलब मेरा कहना है कि आप यू नीड टू टेल योर अंडरस्टैंडिंग. Writing philosophical essays is the easiest thing actually. Subject to the condition you keep on opening up, go deeper deeper deeper. Just ये है तो क्यों है, ये है तो क्यों है, यही philosophy है. What is philosophy according to Plato? Going to the essence. ठीक है, reach to the core, beyond which nothing should be there. That is a philosophy. So if I say this, it will have a wider consequences. I should also tell na what is the basis to say so. I can give illustrations in all places, always. Then you can dramatize your language. In all places, in all ages, we can say that, or human history is full of such examples. Let's talk about India in ancient time. The most well known or the most catastrophic wars we had
was Mahabharat, where somewhere the feelings of injustice, giving a sense of envy, taking away the sense of well-being, has been responsible for such a large scale, such a large cost which humanity had paid at that time. Similarly, we can give example that the Second World War, Hitler, Mussolini felt injustice. That means injustice, number of times we may not be in a position even to visualize the potential cost we are paying by not doing justice. Is that clear? Because this has a potential to destroy the harmony. आप कितना ज्यादा जस्टिस को लेके ही सोच सकते हैं, 10 पैराग्राफ लगभग लिखने, ठीक है, 10 से 12 पैराग्राफ आपको लिखने हैं ऐसे में, तो उसी मुद्दे पे पहले आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है। देन जेंडर पे आते हैं, जेंडर के बारे में फिर कैसे सोचा जाए, जेंडर जस्टिस नहीं होने के क्या पोटेंशियल कॉस्ट है, ठीक है। तो जनरल से हम फिर पर्टिकुलर पे आएंगे। यस, यू वांटेड टू से समथिंग, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे काफी नुकसान हुआ हो। मतलब एग्जाम में आपके पास है तो वही क्या एसेंस है, लेकिन आप, दैट्स व्हाई द क्लास इज देयर। वो वही तो, इट इज कॉल्ड वर्च्यू एथिक्स, फाइन। यू नीड टू बी पुट इनटू दैट सिचुएशन, दैट्स द रोल ऑफ अ टीचर, टू ब्रिंग द थिंग्स आउट ऑफ यू। I am there to give you the direction, na? Pick up that directions. How can you think about these things? ये आपका easiest paper होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। You have substantial knowledge based on the general studies and whichever optional you have. But you need, my class will focus on how to bring the philosopher from inside. आपके अंदर का philosopher बाहर निकालना है। हाँ ठीक है, क्योंकि हम जस्टिस एक वेग कॉन्सेप्ट है, हमें हम जस्टिस के थ्रू समझाएं या इनजस्टिस के थ्रू समझाएं, हमें मेन पर्पस है कि हम काम पूरा करें, ठीक है। हम जस्टिस को ही समझाने, बिकॉज एनीबडी नोज दैट explaining justice is different thing, difficult thing. What is injustice is easy to understand, ठीक है। तो हमें इस आंसर में ये पर्पस क्या है, पर्पस इज आई वांट टू शो समथिंग टू द एग्जामिनर, व्हाट आई वांट टू शो, व्हाट इज माय वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एन इशू, व्हाट इज माय हाउ आई थिंक। I will not start with women empowerment. I will not start with economic gender justice. I will go much deeper. Something which is not visible, I will bring it out. Philosophy is make invisible visible. And how systematically I think about something. मेरे से gender justice, but let me clarify what is justice for me and how important the justice is. तो अभी थोड़ा ओपन एंडेड थिंकिंग करिए, एक बार हम कंटेंट कलेक्शन करेंगे, देन वी विल सी कि किस आंसर में किस फॉर्म में फिट होगा। या हाँ, वो तो अभी भी सॉफ्ट टारगेट है। वुमेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इज इटसेल्फ अ इशू। अब मतलब इसी के ऊपर नहीं, आगे नेक्स्ट आगे भी बढ़ना, चलो हमें ये बताना है कॉन्सिक्वेंसेस, इंडिविजुअल वेलबींग,
and can have a huge potential cost. और हमेशा ड्रामेटाइज करना है, मतलब cost maybe presently what can be the potential cost, maybe presently we cannot calculate. Who knew that the Second World War ending with a sense of injustice will culminate into a tragedy like Hiroshima Nagasaki? Fine. So let us take our imagination to that point. Is this point clear? Fine. So now, yeah. जस्टिस को बोल रहे हैं, जस्टिस के बारे में, तो ये जस्टिस थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में है या डिमांड फॉर जस्टिस? हमको वो जेंडर जस्टिस के बारे में कुछ लिखना है, तो जेंडर जस्टिस के बारे में फिलॉसफी का अप्रोच क्या है कि यू नीड टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी टर्म. कौन है ये कहां से स्टार्ट हो गया? हाँ? ठीक है. तो अब हमने लास्ट लाइन क्या लिखी थी इसमें? तो जो भी हम कहें हमें सब्सटैंशिएट करना है, ठीक है? तो वी हैव एग्जाम्पल्स इन ऑल एजेस ऑल प्लेसेस, ठीक है? तो यू कैन से दैट वी कैन गिव innumerable examples where society had to pay अगर हमें बोलना है ह्यूज कॉस्ट, उसको और ड्रामेटाइज क्या कर सकते हैं? हाँ, कैटेस्ट्रॉफिक, मतलब जो चीज बोलना है उसको ड्रामा करके बोलना है, ठीक है? ह्यूज कॉस्ट, बट वी विल से अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट. कुछ कॉस्ट तो हम दे सकते हैं, कुछ कॉस्ट तो हम नहीं दे सकते. वेयर सोसाइटी हैड टू पे द अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट, अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ और कॉस्ट. अब जो जो जैसे वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन हैं, all ages, all phases, try to collect the list of these words. Fine, that later on you can use all these dramatic words. ठीक है? Unacceptable cause. For example, the epic catastrophic war known as Mahabharat, which brought infinite miseries and destruction, started with the sense of injustice felt by Dhritarashtra, Duryodhan, Karna, Draupadi, and so on. ठीक है? Again, we can say that we can give the example of the Second World War, which was rooted in the deep sense of which was rooted in the deep sense of injustice
felt by Hitler and Mussolini in the settlement known as Treaty of Versailles. देखो अब इसी वर्ड्स को लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय नो मेजर Hitler considered it as a fair deal. ठीक है, तो this is how it is like building a plot, that the bigger idea is justice. It means somewhere justice is a very logical requirement of human mind, some very basic necessity to create a just society, by which we mean a fair society. ठीक है, तो इसमें आगे लिखते हैं, this shows that justice is a very basic need for humans, and that is why one of the greatest philosophers of 20th century, John Rawls, held that, you can give the name of Rawls, held that justice is the first virtue of the social system, like truth is the first virtue of any system of thought. नेक्स्ट पैराग्राफ, अब कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको ट्रांजिशन स्टेटमेंट्स बोलते हैं इन ऐसे। ट्रांजिशन स्टेटमेंट्स, और उसकी भी आपको वोकेबलरी होनी चाहिए, हेंस, देयरफॉर, फाइन। तो अब घर पे आप क्या क्या करोगे, मान लो जो भी कमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ द कमेंट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच वी आर यूजिंग, द ट्रांजिशनल वर्ड्स। यही चीज बस एग्जाम में एक बार रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। तो दीज ट्रांजिशनल वर्ड्स मैटर, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से दैट अबव एनालिसिस शो the significance of establishing a just society full stop, लिखो, right? There may be disagreement over the specificities, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, स्पेसिफिसिटीज ओवर द फॉर्मूला ऑफ जस्टिस, but
there is a consensus over the essence of justice. What is the essence of justice? Fairness. ठीक है? The essence of justice is fairness. Why I am emphasizing? Because this word is used, fairness. ठीक है? और try to bring the statement used in the question time and again in your, so that examiner has an idea that you remain attached to this thing. You are not an absent-minded professor. ठीक है, आप अटैच कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी में लिखते हैं hence it makes sense to create a society which offers a fair deal for all members of the society, irrespective of what? Their caste, color, sex, gender, creed, और ethnicity. creed वही हो गया. ठीक है, अब कोई चीज बहुत ऑब्वियस है. The question of giving a fair deal to all is related to what? With what value can you relate the fair deal to all? क्यों मिलना चाहिए आपको fair deal? जस्टिस एज फेयरनेस किससे लिंक्ड है? डिग्निटी से. ठीक है, तो फेयरनेस का सीधा संबंध ह्यूमन डिग्निटी से है. ठीक है, और दिस इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड थिंग इन एनी फिलोसफिकल आइडिया ऑफ जस्टिस. ठीक है, तो हम हमेशा ऐसे ही कर सकते हैं कि इसमें लिखो राइट, नीडलेस टू से. बड़ी बात कहें लेकिन उसको बहुत हम्बल ढंग से कहें. नीडलेस टू से कहें जरूर, लेकिन बहुत हम्बली कहें. नीडलेस टू से दैट द आइडिया ऑफ जस्टिस इज linked to the idea of human dignity. ठीक है, तो प्रैक्टिस क्या करनी है? नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट्स, समटाइम्स दे गिव कॉन्सेप्ट ऑन म्यूजिक, दे गिव कॉन्सेप्ट ऑन मैथमेटिक्स. हाउ शुड वी थिंक अबाउट इट? फाइन, तो अभी से अगले क्लास तक ऐसे सोचो कि जस्टिस के बारे में if I had to write an essay on the justice itself, what all I could have written. ठीक है, so now let us talk about gender justice. Now come to gender justice. Because we have to talk about working women and home in Indian women getting a fair deal. We need to talk about gender justice. So how should we talk about gender justice now? Is gender justice an issue linked with the dignity of women? And is dignity of women important? If I talk about Indian Constitution, does it talk about dignity of women? Where? In fundamental duties, and if I don't remember, maybe in directive principles also for well-being of women तो है, लेकिन dignity, respecting the dignity of women is one of the fundamental duty. ठीक है, तो one of the basic of all human rights.
ठीक है, तो अब इसके इंपॉर्टेंस पे आना है, जेंडर जस्टिस. द जेंडर इज अ वाइडर टर्म. It is not just linked to women, it is also linked to the third gender also. And the questions so far are primarily focused on women, but in the coming time they will shift from women to gender as happened in this year's question. ठीक है, but again women issues are also important. So we need to talk about gender justice, and we need to think how to think about gender justice now. What will you think about? How will you present this? So lot of homework has to be done, not at home, here itself. ठीक है, ये भी homework ही है before you go to the exam. But how to think and what to think. What should I think about gender justice? अगर आपको कहा जाए write a paragraph on gender justice, what will you write? सबसे पहली बात, try to define something. Rule number 1. Rule number 2 is लुक फॉर इट्स इंपॉर्टेंस. ये लिखिए आप, मतलब ये क्लू लिखिए कि पहले डिफाइन करने की जरूरत होती. ट्राई टू डिफाइन समथिंग, देन कलेक्ट पॉइंट्स टू शो इट्स इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड स्टेप होगा गिव सम फैक्ट्स दैट कैन सब्सटैंशिएट योर. और फोर्थ है वो तो आफ्टर लॉट ऑफ रीडिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है कि हाउ डू यू प्रेजेंट इन अ ड्रामेटिक फॉर्म. इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट थिंग्स इन अ ड्रामेटिक फॉर्म? क्यों? इट इम्पैक्ट्स द माइंड. ठीक है, तो माइंड को इम्पैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ड्रामा. ठीक है, तो वाई शाहरुख खान इज सच अ ग्रेट एक्टर? क्योंकि वो किरण को ही 5 क बोलता है. क्यों बोलता है? बिकॉज यू हैव टू क्रिएट अ स्टाइल. तो स्टाइल मैटर्स, एंड दिस स्टाइल कम्स with when you read some good literature, you get to know how people write. So maybe you don't have enough time, but these interactions you will get to get the pulse of all these things. आप तो ओवर प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है, वैसे भी इसके इतने एक्सरसाइज के बिना भी लोग ऐसे लिख लेते, लेकिन ओवर प्रिपेयर्ड हो जाओगे. तो कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट स्टेप में कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशन, बेसिक्स, एंड देन लुक इफ आई कैन talk it in a more dramatic manner. Suppose if I have to start talking about the gender justice in class or in any public meeting, how can I bring that drama? Biological terms नहीं, ड्रामा में क्या चीजें मदद करेंगी? इमोशंस. मतलब कुछ हम डेटा दे सकते हैं. आई कैन गिव अ डेटा. और जेंडर जस्टिस का कौन सा डेटा सबसे ज्यादा इमोशनल कर सकता है आपको? जेंडर गैप इंडेक्स से भी ज्यादा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एंड the instances of the violence, some instances of the violence which have happened in some recent past. So do you remember certain incidents? The Manipur incident, the so many incidents, so many events that you see in Gaza and Hamas and this region also. ठीक है, in Ukraine war. You look for
अब इसको अगर हमें ड्रामेटाइज करना है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, आई कैन प्रेजेंट इट, द वायलेंस अगेंस्ट, डेटा शो the violence is happening against women every second and everywhere, and this fact is visible even from the space. कोई मून पे भी बैठेगा तो भी उसे दिखेगा that the violence is happening. It is so easy to see because it is happening every time, everywhere. And it is happening to such an extent every time, everywhere, that unfortunately a person from moon will recognize, but the person on earth will not recognize. Why? Because it has become so normalized. We have become so much used to see all these things. तो तुमको ऐसा कुछ बोलना है कि भाई तुम्हारा मन वो क्यों नहीं कर रहा है, हाउ कैन यू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, आपके आसपास चीजें हो रही हैं, एवरी मिनट an event or some incident is happening in and around all of us, and the innumerable form in which the rights of the women are being impacted. But unfortunately, it has become so normalized that we fail to even recognize it. The matter, ऐसे सब आप थोड़ा स्टाइल करिए, the sad state of affairs is something which is visible, which has to be visible, has become invisible. So number of times in media you get to know some main events, but there are very number of events which hardly are being reported, and there is a reluctance among the women themselves to go and report and to reveal for various reasons. Maybe the stigma attached, maybe the lack of conducive environment in family, in governance. So this is something that needs to be understood. ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना है that compels people, the other person who is writing, who is reading your essay, feels compelled to read it and see that with what seriousness you are understanding the issue. अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत एब्स्ट्रैक्ट आ जाएंगे, लेकिन वुमेन वाला तो वी स्टडी इन एवरी पेपर. वुमेन इशू है, लिटरेसी वाला जो इशू है या एजुकेशन है, ये सब चीजें में तो हमारे पास हमेशा डेटा रहेगा. यस नहीं, पहले जनरल फिलॉसफी में एक होता है कि यू नीड टू टेल द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू हैव टू फर्स्ट कम्युनिकेट, यू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी वेदर यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. पहले आपको ये बताना पड़ेगा. तो जेंडर जस्टिस में ऑब्वियसली हम वुमेन स्पेस के ही से नहीं कहेंगे, बट बिकॉज द क्वेश्चन इज we will shift the discussion more quickly to the issue which we have to discuss. ठीक है, तो we have to talk about gender justice, and you need to think how will you think about gender justice. ठीक है, तो how will you think, how will you start talking about gender justice? You can, there are two ways. Either you start with an illustration, you start with some data, or you can start with explaining the concept itself.
You can choose either of the ways. Fine. So you can start. Suppose if I will start discussing from the perspective of the status of women, after data I will explain the gender justice. Or I can first explain the gender justice and then I will talk about the data. ठीक है, हमें अपनी बात रखनी है और उसका इंपॉर्टेंस समझाना है. ठीक है. सो बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें वुमेन स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो हम यहाँ पर वुमेन से लेकर के आ सकते हैं. पहले के जो अर्लियर क्वेश्चंस हैं which are more on women, new women in India is a myth, hand that rocks the cradle rules the world. But right now the questions are, girls are weighed down by restrictions, boys with demand, two equally harmful discipline. Whose statement is this? Simone de Beauvoir's statement. Every statement is coming from a person known for it. If development is not engendered, it is endangered. Whose statement? Development is not engendered. Development, if we are not making it woman specific, the development itself become endangered. Guess who would have been talking about inclusive development, growth, sustainable? अमर्त्य सेन. लेकिन वैसे ये स्टेटमेंट is based on Amartya Sen's idea, but it is a specific statement given by Mehboob ul Haq while he proposed that Human Development Index. Fine. So, in which year we have adopted Sustainable Development Goals? 15? That's why that question came. Every question is related to something great happening, and how much are you aware of it? So this question is directly from the Sustainable Development Goal number 5, which is considered to be the basic to attain all other 17 goals. ठीक है. So now let us think about managing work and home Indian women, because ये women specific thing है. ठीक है, but women specific के लिए भी always look for a broader context. If you will, because if you will not look into the broader context, you will start running short of the ideas and words. Basic problem does not arise in writing introduction and conclusions, but the basic problem arises writing the 7-8 paragraphs which form the main body, and people start doing unnecessary historical importance. अब इसमें historical cultural importance क्या लिखेंगे आप? ठीक है, तो broad ideas हम लेके चलते हैं gender, justice and women. ठीक है, तो हम इसमें पहले लिखेंगे on situation of women. ठीक है, तो आप सोचो what will you write about women? You can say that women constitute half of the human race, but unfortunately human society has failed to give the fair deal to the woman. ठीक है, अब this discrimination against women
is historic. This discrimination, justice opposite to fair भाई discrimination है, तो this discrimination against women is historic and unfortunately continues even in the present. ठीक है, अब इसमें एक ड्रामेटिक प्रोवर्ब फ्रेज ऐसे लिख दो, राइट, इट दैट इज वाई, या इट इज सेड दैट more the world changes, more the world changes, more it remains the same. More the world changes, more it remains the same. कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया. ठीक है, अब लिखो this description holds all the more truth if we talk about the status of women. All the more truth if we talk about the status of women across the societies. East or west, north or south. ठीक है, तो लिख सकते हैं there is no dearth, dearth, there is no scarcity, there is no dearth of the legislations aiming to give women a fair deal or policy statements global conventions institutional arrangements yet we are far from achieving the goals of the equality between the sexes. ठीक है, तो लिखो to put the things in perspective, to put the things in perspective. ऐसे स्टेटमेंट्स भी याद रखो, ये सब ट्रांजिशनल स्टेटमेंट्स हैं, कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव वी कैन टॉक अबाउट या वी कैन मेंशन सम recent data highlighting the status of women ठीक है. अब I will give you at one place data, अभी एक broadly लिखते हैं डेटा में, लेकिन आप एग्जाम preparedness is you should be ready with the data, वो आपके पास होना चाहिए एग्जाम में.
ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम एक ब्रॉड डेटा लिखते हैं दैट डिस्पाइट proven biologically that women live longer and the girl child has greater chances of survival the sex ratio remains unfavorable. आइडियली वुमेन ज्यादा होनी चाहिए बट ग्लोबली भी वुमेन ज्यादा नहीं. सेक्स रेशियो रिमेन्स अनफेवरेबल. ठीक है, तो दिस इंपॉर्टेंट आइडिया इज कॉल्ड एज व्हाट? फिनोमिना. इसका क्या टर्म है? What term you will use to show that you have studied the things? लिखो, right? A phenomena termed by Nobel laureate Amartya Sen as the phenomena of missing woman. What does it say? The problem lies in nature or culture? Culture. ठीक है, it shows that this state of affair is not due to nature, rather due to culture. फिर इसी को लगते हैं, it is not the act of God. Whose act? It is an act of human. We may not change the act of God, but we can definitely change the act of human. हाँ, मतलब हम तो बस डेवलप, ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन दिया जाए तो आपको सोचना आ जाएगा. ठीक है, अब जैसे अब ये वर्ड हो गया एक्ट ऑफ गॉड वर्सेस एक्ट ऑफ ह्यूमन. इसको आप इन्वायरमेंट में लगाओ, एलजीबीटी में लगाओ, कहीं भी लगाओ ये सब चीजें. तो ऐसी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए रेडीमेड. ठीक है, अभी इंडियन नहीं, हमेशा पहले आप टेक्निक समझिए आंसर लिखने की, जनरल से पर्टिकुलर. पहले हमेशा चीजों को, जिसको व्हाट आई एम सेइंग कि आप पहले जस्टिस में बात करें, तो व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग? आई एम पुटिंग द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. You need to develop a perspective under which something has to be discussed. Otherwise, you can't discuss. ठीक है, तो एक पर्सपेक्टिव बनाया जाता है आंसर लिखते समय, चाहे आप आंसर लिखे या ऐसे लिखे. तो पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. तो अभी पहले जनरल डिस्कशन करो, फिर हम इंडियन वुमेन के ऊपर आएंगे. दिस इज वन थिंग. इसका मतलब है, अब इसको और थोड़ा इमोशनल करो एग्जामिनर को. ठीक है, इट मीन्स दैट द मोस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ the half of human race is endangered even before
birth. ठीक है? So what we see, the problems like feticide, infanticide, even if there are laws like prevention of diagnostic testing and all, but the phenomena is continuing. So this is one very survival. आप इसमें लिखो, right, besides this basic besides the violation of this basic human right, women face violence range of violence. ठीक है? अब what is that range of violence? What will you write about range of violence? Domestic और workplaces और क्या? रेंज ऑफ वायलेंस जब आपको डिस्कस करना है तो डोमेस्टिक नहीं, रेंज ऑफ वायलेंस आप डिस्कस करिए साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, ऑल टाइप ऑफ वायलेंस. फिर डिस्कस करिए प्लेसेस ऑफ वायलेंस. ठीक है? तो पहले रेंज ऑफ वायलेंस. ठीक है? तो रेंज ऑफ वायलेंस इज नॉट जस्ट फिजिकल but also mental, emotional. ये रेंज हुआ. सेकेंड प्लेस, बोथ in public sphere as well as in private sphere. ठीक है? So again you can write that in one of the reports published by the Apex institution, that is UN Women, and there are new instruments of violence that have emerged. One such instrument is technology, communication technology. एक वर्ड है ना, sexting word, where you send the indecent messages, you try like invade the right to privacy, intimidate women. By intimidating them they may put their videos and all these things. Fine. तो ये सब एक new forms of violences are, we are unable to handle the old, and the new forms of violences have also emerged. Similarly, ऐसे लिखो, similarly studies show that pandemic has increased the graph of violence for various reasons. So various reasons means loss of jobs, comma, right, violence, online violence has also increased. Then violence by service providers,
तो various studies this show. And again, you can say that the recent clippings across the world about women becoming subject of targeted violence in ongoing war zones. And among the global crimes, and even in India, more than 50% of the crimes committed are against women. तो वो सब एक जगह हम डेटा कर लेंगे. तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है वायलेंस का इशू. ठीक है. अब सेकेंड हम कर सकते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन. So, and that is, we can talk about feminization of poverty. ठीक है. अच्छा, putting women go back to the domestic sphere. तो वो मार्क्स ने एक्सप्लेन किया है कि कैपिटलिज्म uses women as a surplus labor when men are not there and then deprive them from the work. ठीक है. once that requirement is not there, तो ऐसे कर सकते हैं. हाँ. तो हमने नेक्स्ट क्या है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. ठीक है. सो राइट अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय Diana Pierce, D-I-A-N-A, Diana Pierce, P-I-E-R-C-E, Pierce, long time back. तो वो देख लेना, मुझे याद नहीं है, 70s का कॉन्सेप्ट है शायद. लॉन्ग टाइम बैक, कॉमा, स्टिल होल्ड्स ट्रू. ठीक है. तो वुमेन फॉर्म द मेजॉरिटी अमंग the poor in the world. Right, there is a lack of equitable access to economic resources, land, property, and even in employment. Employment एक issue है. ठीक है. तो you can say that the recent reports have shown the imbalance in the participation of women in the labor force. ठीक है. Right. The issue is so much significant in understanding the status of women that this year's Nobel Prize
for economy has been awarded to Claudia Gordon, CLAUDIA, sorry, Golden, है ना, Claudia Golden, for her extensive work on women labor force participation. ठीक है, अब कह सकते हैं राइट, इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब वो तो एक एविडेंट डेटा है, ठीक है, देयर आर डीपर इश्यूज. What is a deeper issue with respect to the labor force of women? Pardon? हाँ, the deeper issues reflecting, ऐसे लिखो, the deeper issues reflecting the biasness means in terms of wages, they are still not getting equal wages. Next, limited participation in positions of authority. And the biggest issue is, yeah, ऐसे लिखो, the biggest issue faced by the women movement since long is what? The accounting of the domestic labor done by women. Will it help the woman if the domestic labor is also quantified? Yes. So, women, almost every woman is employed, but they are not getting the remuneration of their employment. So, what is our employment? The employment is you are working and you are getting something in return. But in the family, you are not getting that any return in concrete terms. The return, how you justify it? You justify in terms of the intangibles like the care and affection, but the other hard fact is again that the data show that the greatest amount of violence against women is in families. ठीक है, तो this is one very major issue for the women movement and the biggest failure, that the domestic labor is yet not being recognized as a part of GNP, yeah, GDP, and women contribution, actual contribution is not even recognized. And the paradox is that it is not, and it is actually undervalued. Lack of recognition तो है, but how our society addresses it, they always undervalue the work of a woman, that the work of women is not so important.
which itself is a big conspiracy. If you go by the feminist scholars, they believe that if the entire, ये basically concern है of the socialist feminists, and they believe that if women work will start getting accounted, the structure of capitalism will collapse. Fine, because then a husband will have to give a minimum wage to the woman, means the person will be demanding greater hike in the salary, and the company will have to give the greater hike. This will again, the system of capitalism will collapse. So unfortunately, people are not even aware of the depth of this particular issue. ठीक है, क्या लिखा है हमने लास्ट लाइन में? मैम, या रिजर्वेशन गिवन बाय द इंडियन पार्लियामेंट, उसे किस तरीके से देखा जाए, जस्टिस या इनजस्टिस? आराम आराम से बोलिए, थोड़ा दूर रखें. रिजर्वेशन गिवन बाय द इंडियन पार्लियामेंट, उसे किस तरीके से देखा जाए, जस्टिस या इनजस्टिस? जस्टिस ही है. आपको फेयर लग रहा है कि नहीं लग रहा? और अगर आपको फेयर नहीं लग रहा है तो फिर आपके अंदर इंट्यूशन ऑफ जस्टिस नहीं. जस्टिस इज गिविंग एवरी पर्सन हिज ड्यू. Fine. So it's a long time women have not been given due. Fine. And that is the reason of the lack of enough participation of women, and at the crux of, जैसे इसी में कहीं दिया था, that is not the only thing that is to be done. Fine. So economic empowerment is not enough. More important is political empowerment. ठीक है, political empowerment तो और ज्यादा important है. Giving a position of decision making, involving women in the decision making is all the more important. Why, मैम, फिर क्यों 33%? क्या फिर क्यों 33%? 33 क्यों दे रहे हैं? इक्वालिटी कहाँ है? अब वो तो पॉलिसी मैटर है, वो हम कैसे बताएं? You should not discuss about exactly the policy failures क्या हैं. पहले आपको इश्यूज समझने पड़ेंगे. ठीक है, वो एक वन ऑफ द स्टेप है. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अनदर स्टेप है. लेकिन यू हैव टू मेक lot of structural changes in bringing the goal of gender equality, which is envisaged in the constitution, which is mentioned in all UN documents, and which are very religiously and ritualistically repeated by every politician everywhere. ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसके चीजें हैं, आपको ये सब, इसी को हमको, in fact we need to understand what is empowerment, what are dimensions of empowerment, which empowerment will be important. तो पहले थोड़ा सा लिटरेचर आपके पास होना चाहिए टू बी एबल टू राइट. तो आपको ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि यू कैन राइट समथिंग सेंस, और उसके पहले जब आप लिखने वाले थे सब नॉनसेंस. क्योंकि क्या लिखते, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, अ प्रैक्टिस टू सिट एंड थिंक, contemplation. So consider this class like that you will get to know how to think about that particular issue. Yes.
आप नहीं, आपके पास इनजस्टिस अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब है आपके पास एडिक्वेट रीजन की कमी। अब एडिक्वेट रीजन की अगर कमी होगी तो वो आप वैसे ही नहीं सिलेक्ट होंगे, चाहे आप, इसका मतलब है आपको अपनी थिंकिंग बढ़ानी, आप यू आर गोइंग टू बी इन पावर, तो पावर में आने के बाद अपने ही साथ जस्टिस मत करते बैठना। जिसके लिए सिविल सर्वेंट, you need to think from the perspective of vulnerable section, and not just as a member of civil services, also otherwise any sensible person needs to think about it. And it is not, first of all, to be able to do justice and to be able to think rationally, you have to go in a original position where you do not know who you are, whether you are a man or a woman, and you have to put yourself in the shoes of someone. Matlab, one of the characteristics of a leader is empathy. आपको अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स ऑफ आ एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर होते हैं, अ करेज, रीजन, जस्टिस, एम्पैथी, compassion, every element should be brought in this essay. ऐसे मतलब सारी पढ़ाई का ही वो निचोड़ है, और पर्सनालिटी का बेस्ट टेस्ट है। इंटरव्यू का टाइम भी पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं, ये है टेस्ट। तो अगर आपको लगता है, डजंट मीन कि आपको जो लगता है वो सही लगता है। तो आपका प्रैक्टिस क्या करने को होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मुझे ये गलत क्यों लगता है, मेरी थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम, एंड यू नीड टू करेक्ट इट। And rather than going by your own thinking, you need to develop correct thinking. कि approach क्या है, या ठीक है, काम हस्बैंड करे लेकिन नाम होना भी कोई कम बात नहीं, बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ बीइंग नेमलेस एंड अ फेसलेस। इवन इफ देर इज अ नेम, इट मैटर्स। यू कैन नॉट ब्रिंग change in a single day, ठीक है। तो change happens, there is a impact known as trickle down effect. तो situation is definitely was like this, but again you cannot generalize, but the data, always talk on data, the data show that things have changed. It has not changed, there is certainly the regional variations. If you talk about women empowerment in India, the situation in Kerala and Haryana can be very different. But be optimistic. आपको वो आर्ग्यूमेंट नहीं पकड़ने कि वुमेन नहीं, मैन ही काम कर रहा है। तो नाम भी कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्नेचर भी मैन कर रहा है, करने दो, लेकिन किसका सिग्नेचर कर रहा है, नाम किसका है। नाम फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर women as an individual having no name of theirs, they were known as Mrs. this, Mrs. that. अब Mrs. this
में जो मैन है वो खुद लिख रहा है उसकी वाइफ का नाम, तो ये यू शुड कंसीडर इट एज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। आप ऐसे नहीं देख सकते कि आज ही आपने बीज बोया और कल आपको बिल्कुल मैंगो मिल गए। यू हैव टू वेट फॉर इट। बट अगर इतना भी हो रहा है, यू शुड कंसीडर इट एज अ रेवोल्यूशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लुक एट द थिंग्स। आप अपने अप्रोच बताइए कि आपसे पूछा जाएगा कि वुमेन, it doesn't matter, but you can say it matters. Even the token gestures matter. Any step matters करता है। Outcome, first let us have consensus on the idea itself, and then you move forward how the idea to be practiced, and you can keep on rectifying that idea. You have not reached to moon also in the single flight. ठीक है, तो क्या बात हस्बैंड क्या कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, बात ये है कि you need to bring a change. You cannot undermine the value of these type of actions. ठीक है, प्लस ऐसे लोग जिनको ये सब गलत लगता है उनको अपनी थिंकिंग करेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपकी पूरी पर्सनालिटी आपके उसमें आ जाएगी। चलो अब नेक्स्ट हम क्या पॉइंट लिख रहे थे? Why there is a no solution? ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? What is my view on? It should be accountable because if economic, पूरा क्वेश्चन ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे है, बिकॉज इफ इकोनॉमिक, अब आपको नेक्स्ट सोचना होगा व्हाई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मैटर्स, बिकॉज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट गिव यू a scope for independent thinking, and scope of independent thinking gives you a scope to assert your existence and individuality. So among different empowerments, economic empowerment is very important. And then why it has not happened? Because people are not aware of it. कितने लोगों को बस इतना पता है डोमेस्टिक लेबर नहीं अकाउंट होती, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं सोचा कभी। क्यों नहीं होती? पहले रीजन ये समझ में आया, कैपिटलिज्म एक रीजन है। तो कैपिटलिज्म है, तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आपको फाइट करना है। तो उसमें अब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट, द फाइट अगेंस्ट एनीथिंग फर्स्ट रिक्वायर अवेयरनेस। Amartya Sen says that anything changes only when it becomes a matter of public discourse. Do we talk about these things when? How many? अगर ये क्लास ही नहीं होता तो क्या तुमने इन चीजों के बारे में कभी बोला होता? हाँ, टीवी पे, लेकिन कितना, कितनी फ्रीक्वेंसी से? वो जो इशू है आपको पहले घर घर तक पहुंचाना होगा, और सबसे इंपैक्टेड कौन है? वुमेन। वुमेन खुद नहीं उसको समझते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। देयर इज अ रिपोर्ट बाय प्यू रिसर्च, अभी एक सर्वे आया है जिसमें वुमेन इन इंडिया आर देमसेल्व्स नॉट एक्सेप्टिंग दैट देयर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। किसी वुमेन को घर के काम के लिए, मान लो हम अपनी मदर को घर के काम के लिए पैसा दे दें तो वो कहेंगी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। फिर वो ऊपर से क्या है, और भी क्या है, कोई लड़की से नहीं लेगा। ठीक है, भले अपने दिक्कत में रह ले। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, यू हैव टू ब्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन आउट ऑफ इट। तो इसीलिए
जैसे सॉल्यूशंस टू द वुमेन प्रॉब्लम में एक फॉर्मूला लिख लो जो हमेशा आपको देना चाहिए, मेक इनविजिबल विजिबल। विजिबिलिटी लानी पड़ेगी चीजों में, मेक इनविजिबल विजिबल। और वही है आपको उसके अगेंस्ट, मतलब यू हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस। नेक्स्ट जो चेंज आता है किसी के भी कॉन्टेक्स्ट में, आप चेंज, इवन इफ यू हैव टू राइट एन एसे ऑन सेम सेक्स मैरिज और एनीथिंग, द चेंज मीन्स यू हैव टू मेक द इशू ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। ये याद रखिए, इशू ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स करना होगा। नेक्स्ट हमेशा इशू होता है, यू नीड मोर एंड मोर डेटा, यू नीड मोर एंड मोर रिसर्च। डेटा, बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस करना है, यू नीड टू डू फील्ड रिसर्च। बहुत ही आइडियली कैसे आप करेंगे उस चीज को, तो अभी वुमेन उसमें वही है कि इनविजिबल, और जिसका रियलाइजेशन नहीं है, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ sense of realization and awareness that something wrong is happening. And it is not so easy for the people to come out the social taboos. ठीक है, तो इसी में कहीं एक और भी क्वेश्चन था कि not only women need to understand, men also need to understand. And जैसे मैंने कुछ कोट्स भी इकट्ठे किए हैं कि एक जगह लिखा देंगे, बेटी फ्रीडन का कोट है कि men are not problem of women, women are themselves problem until and unless they develop a sense of self respect. But how they are going to do it? By education. But who will create it? State. ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सीगी इंडेक्स। ठीक है, SIGI सीगी इंडेक्स, वो भी हम लिखा देंगे अभी। तो उस इंडेक्स से पता चलता है द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स शेपिंग और प्रोहिबिटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है सीगी की, अगर आप रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट आइडियाज टू राइट आंसर्स ऑन वुमेन रिलेटेड इश्यूज, कि कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल, क्योंकि अब एक मेन कंसेंसस ये है, मच ऑफ द प्रॉब्लम आर सोशल कल्चरल, नॉट बायोलॉजिकल। ठीक है, तो बायोलॉजिकली men and women differ only with respect to childbirth, but there is no work, forget women can join army or not, but there is no women work which men cannot do. Forget that debate that women are not fit for that work, but there are many works which men can do and they are doing also. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, फाइन। तो अब ये कुकिंग का ही काम है। अब जब से मेन ने कुकिंग लिया तो वो उसका मार्केट वैल्यू है। आप मोस्ट ऑफ द कुक्स आर मेन, शेफ्स आर मेन, जिसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, लेकिन वुमेन को नहीं दे रहे हो रेम्यूनरेशन फॉर कुकिंग इन द फैमिली। इसका मतलब है रेम्यूनरेशन जो आपको मिल रहा है दैट इज बीइंग गिवन बाय द मार्केट। तो मार्केट से रेम्यूनरेशन आपको मिलता है, तो मार्केट फैमिली के बाहर है, इसलिए वुमेन नीड्स टू वर्क आउटसाइड। अब वुमेन नीड टू वर्क आउटसाइड मीन्स दे आर डेवलपिंग अ डुअल बर्डन, बिकॉज domestic work is not being taken up by men. So that also needs to be taken up. Why men do not take up the domestic work? Because certain works are gendered.
कि ये वुमेन वर्क है, लोग कहेंगे औरतों वाले काम कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हारी मदर या वुमेन की मदर इन लॉ ही कहेंगी कि मेरे बेटे से औरतों वाले काम करा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको औरतों वाले काम, आपको जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, नॉट जस्ट दिस थिंग, इवन वर्क को जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जेंडर का जो इशू है इसको समझना पड़ेगा। तो डुअल बर्डन, यही तो मतलब एक भी टॉपिक आप लीजिए, पूरा का पूरा वो इश्यूज में आ जाता है। है? नहीं मान लेता है, ये गलत। आप बहुत लिमिटेड लेवल पे आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मान नहीं लेता है। बट ये सब शादी से पहले ही होता है। हमसे अच्छा एक्सपीरियंस, शादी से पहले सब बात मानते हैं, कुछ टाइम तक ही, तो उसके बाद नहीं मानते। और वो जेनरिक फीचर नहीं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस है, और ओनली हस्बैंड इज नॉट अ प्रॉब्लम ना, डोमेस्टिक वायलेंस। फिर अब ये सब डेटा पे अपने को बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मेन के साथ भी होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे यहाँ वुमेन ही का नहीं अवेलेबल है, तो मेन का कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा? और वुमेन, जब वुमेन के साथ हो रहा है और विजिबल है, तब भी वुमेन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, दे डोंट गिव द रियल। लोग फैमिली की बात बाहर नहीं बोलते। तो मेन तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो मेन के लिए तो ये उनकी ईगो की बात हो जाएगी, दे विल नॉट टेल। हाँ, तो अभी हम मेन की प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में। हम लोग एक एक करके ही डिस्कस कर सकते हैं, चिल्ड्रन की भी प्रॉब्लम है अलग, लेकिन अभी हम वुमेन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ? पीड़ित है, ये पीड़ित है और ये अपीड़ित है। हाँ, आई विल गिव, मैंने सारा डेटा लिखा है, लेकिन अभी डेटा में जाएंगे ना, तो पहले ग्लोबल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, सीजी इंडेक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर टाइम नहीं आपके पास आप पढ़ सकते हैं, वरना आई विल गिव। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट का ही थोड़ी लिखना है, उससे कोई लेना देना थोड़ी है। गवर्नमेंट बदलती भी तो है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ और बोलेगी। तुम लोग फ्लो बिगाड़ दे रहे हो, चीजों का फ्लो करो। मैम, क्या लिखा है? मैम, हाँ? मैम, what can we say about domestic workers, because they are kind of sharing? Can we mention about domestic workers, because they are kind of sharing the work of the working women Domestic workers? help. Yes. Domestic help is a different issue. Fine. Domestic help you don't pay even if they are men also. That is a different issue. Right now, इसी ऐसे सारी प्रॉब्लम आज ही थोड़ी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वो भी डेमो क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो मतलब डेमो क्लास में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो। इतने दिन से पार्लियामेंट नहीं कर पा रहा है वो, चलो ठीक है। हाँ, व्हाट आज डेटा ने देंगे, ठीक है, बिकॉज आई, हाँ, तो आज पहले आपको बेसिक्स समझना है। डेटा करने से ना फिर वो अलग से रखेंगे नोट्स, क्योंकि बाद में आप डेटा ही याद रखिए। चलिए आगे क्या हम लोगों ने लिखा है? इज नॉट बीइंग
counted. So it is a very invisible type of a thing. तो अगर यही count हो जाए तो that itself is a very important thing. ठीक है, तो none of the women has been employed. Every woman is employed. The only thing is employment, you understand, only when it is paid. Rest is not considered as an employment. ठीक है, तो ये एक second चीज है, feminization of poverty. Now the third problem with respect to women you should talk about lack of representation. Next जल्दी से लिखो, lack of representation. Of women in decision making structures. इसका मतलब है lack of political empowerment. ठीक है, political, even in companies also, so all these things. So this was the reason that it has been held that political representation of women needs to be increased, because decision making में आना मतलब it gives you a sense of empowerment. ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि this fact has been recognized in various policy documents and has been a factor behind certain steps taken in India, like 73rd Amendment Act, 74th Amendment Act, and now which amendment? 106th Amendment Act. ठीक है, और भी हम लोग डेटा इसका लिख देंगे. तो अब हमने स्टेटस ऑफ वुमेन को डिस्क्राइब कर दिया. नेक्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इफ वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली. तो उसका क्या, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड क्रिएट इंक्लूसिव सोसाइटीज. इसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो ये अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि व्हाई जेंडर इक्वालिटी मैटर्स, या व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव equal status to women, means what are the possible costs society is paying, not just the individual cost, but a possible cost society is paying for this discrimination. क्या कॉस्ट है? वो तो सेक्स रेशियो के उसके कारण देयर हैव बीन villages in Haryana where for years women, there has been no birth of girl child, and that was not a miracle of God, that was a miracle of humans, human miracle ही था. So that's why बेटी बचाओ thing started from Panipat. Fine. तो ये सब जो मिराकल है, भगवान का मिराकल नहीं चल रहा है. ठीक है, हम सब भगवान एकदम चल रहा है भारत में. ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि कॉस्ट क्या है. इफ वी डू नॉट गिव, इट्स सोशल कॉस्ट समझना है. या यू नीड टू अंडरस्टैंड
why development and empowerment of women is understood as most critical. इतना critical मुद्दा क्यों है ये और कैसे है? कोई illustration आप दे सकते हैं? Yes. When a woman is not empowered and when she's not treated equally in a family, it creates a sense of guilt in her after certain time, so much so that she feels guilty even if she spends, for example, 10 rupees on herself. She considers herself as worthless, which further gets reflected to in the family as well, and this vicious cycle goes on because her daughter and her daughter's daughter have seen the same thing. तो हाँ वो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि from women perspective, don't empower women. Understand why to empower women. ठीक है, वुमेन को छोड़ दीजिए, वुमेन के लिए नहीं, आप अपने लिए वुमेन को एम्पावर करें. ठीक है, तो आपको ये रैशनल समझना होगा why the sustainable development goals treat women at the center. डिग्निटी छोड़ दो, हाफ ऑफ द लेबर वुमेन है कि नहीं? ठीक है, फिर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर, हमको इमोशनली बात ही नहीं करनी, लेट्स टॉक वेरी प्रैग्मेटिकली, इकोनॉमिक सेंस में आप बात करें. पॉपुलेशन जो हाफ लेबर फोर्स है वो तो वुमेन है. अगर आप वुमेन को स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी कॉस्ट? तो वुमेन डेवलपमेंट is the center of all developments, and that is being recognized because half of the human race, you cannot live like that. And whether it is a strategy of आज का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर में वुमेन डेवलपमेंट है. विदाउट वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन आर बोथ द एजेंट्स ऑफ चेंज as well as the beneficiaries of the change, but they are not being seen only as the beneficiaries of the change. Only women are not the beneficiaries of the change. Again, matlab men is also beneficiary of that change. So any policy document recognizes the centrality of women as the agent of change, because there is no walk of life which is up, you can say, routine life, day to day affairs, where women are not working. The only thing is we are not recognizing that particular work. And again, there are many problems like climate change के भी सेंटर में वुमेन एम्पावरमेंट है. एसडीजी के सेंटर में, क्योंकि आप डेवलप, यू आर रिड्यूस, यू वांट टू गो फॉर डेवलपमेंट, यू वांट टू रिड्यूस द पॉवर्टी. who constitute the maximum number of poors? Women. तो डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो ऑब्वियसली वुमेन को ही आपको मेन सेगमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन विच रिमेन्स अनडेवलप्ड इज वुमेन. सेकेंड चीज है हु विल मेक देम डेवलप, तो वुमेन खुद बनाना पड़ेगा. इसीलिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के कोर में वुमेन है. वुमेन आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज the agents of change, be it economic growth, be it climate change,
and as an agent of change, they will not be the only beneficiaries. There will be a beneficiary, मतलब the entire in totality है, ये ऐसा माना गया है. ऐसे आई थिंक पंडित नेहरू हैज सेड दैट, या किसने बोला है ना, यू टीच वन वुमेन. हाँ हाँ, तो सोसाइटी मतलब इस टाइप का इफेक्ट है. तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन is a issue which it is a public good. It is not just meant for women themselves. ठीक है. तो नेक्स्ट जो लाइन ऑफ थॉट आपको सोचना है वो ये सोचना है कि बिल्डिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन is not just for the empowerment of women, is not just for the benefit of women. It is at the core of all developmental strategies. Core of all developmental strategies. इसमें लिख लो, लिखो, right? Women are being recognized as not just the beneficiaries of development, rather agents of change. It is being recognized that empowerment of women has to be at the center of all sustainable, या all 17 sustainable development goals. फिर the special importance is of SDG goal number 5. So from any angle, you can't eradicate the poverty without capacity building. फिर capacity building of the poor. तो largest number of poor, women. Largest number of deprived, women. The biggest sufferers of displacement, women. Biggest sufferers of disasters, women. Fine. Plus at the same time, women, if trained, there are so many studies which show that if you give employment to men and employment to women, there is a better result in terms of women contributes more in terms of the improving the nutrition standard in the family, in improving the other standards in the family. तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो डबल बेनिफिट रहा है. ठीक है. तो तुमको ये लाइन ऑफ थॉट लेके चलना पड़ेगा. उसके बाद हमको डिस्कस करना पड़ेगा एम्पावरमेंट, देन
dimensions of empowerment, or with a special focus on all empowerment but economic empowerment क्योंकि labor force participation है, और दूसरा because of reservations we should have a strong theoretical ground to write on political empowerment and its need. ठीक है, तो in the next class we will discuss this, and the next class I'll take on this Saturday itself because फिर ये टॉपिक रह जाएगा. तो तारीख क्या है नेक्स्ट सैटरडे? दिवाली है. My God. दिवाली के बाद. हाँ बेटा, सैटरडे को छोटी दिवाली है. ठीक है, तो एक बार आप मेल चेक करिएगा, अगर फ्राइडे या कुछ को हो पाया तो आई विल डू दैट. आप अभी जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करो कि व्हाई empowerment of women is central to all development strategies. आप वो मुद्दे ना लाएं, आप बस ये समझे कि हमको तुम्हें लग रहा है तुम ऐसे ऐसे लिखोगे जाके. Let us talk about the things which we will be using and requiring. इसमें डाल